बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम स्पीकर्स गानूर में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शबीर चौधरी। Assalamu alaikum and a very good evening to you all, and I'm Abdul Ghaffar Shapal. Welcome to yet another edition of Speaker's Corner. Those of you who watch the show regularly will know that we've always got two guests, and I'm delighted to tell you that tonight we have two guests with us again. We've got two delightful young ladies who are involved in British politics with us tonight. Our first guest is Naseem Ayub, who is a Luton Borough Councillor for the Labour Party and also has been selected to run for the European Parliament as an MEP for the whole of the eastern region of the United Kingdom. Assalamu alaikum and a very good evening to you, Naseem. Welcome. Thank you. And second guest tonight is another Labour councillor and a former deputy mayor of Luton Borough Council, and she is Asma Rator. Assalamu alaikum to you too, Asma, and welcome to the show. नाज़रीन कराम, आज का प्रोग्राम इस लिहाज से इनफरादियत रखता है कि हमारी इस महफिल में आज दो कश्मीरी बहनें मौजूद हैं। हम उनसे सवालात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आरिफ शाहिद साहब, जिनको रावलपिंडी में 13 मई को कत्ल कर दिया गया था और कश्मीरी उस पर एहतजाज कर रहे थे मुख्तलिफ़ जगहों पर, और ये सिलसिला एहतजाज का जारी है। और कल जो है थर्सडे को कश्मीरियों ने सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने जाकर भरपूर एहतजाज किया और ये मुतालबा किया है कि आरिफ शाहिद के जो कातिल हैं उनको पकड़ा जाए और उनको सज़ा दी जाए, क्योंकि ये पॉलिटिक्स ऑफ जो है ना फियर एंड इंटिमिडेशन ये बंद होनी चाहिए, हरासमेंट जो है बंद होना चाहिए। तो ये कहने के बाद मैं चाहूँगा कि इस बात को आगे बढ़ाया जाए। हम समझते हैं कि माशरे में औरतों का बेहद आम रोल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरों में औरतों का समझा जाता है कि रोल किचन तक ही महदूद है। ये बात गलत है। कोई भी माशरा, इंसानी माशरा, औरतों के वजूद और औरतों के रोल के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता, और इसी लिहाज से हम समझते हैं कि ख़वातीन को आगे आकर अपना रोल अदा करना चाहिए। और इसी मकसद के लिए हमने आज दो ख़वातीन को जिन्होंने अपना एक मुकाम बना लिया है, और एक जो हैं डिप्टी मेयर भी रह चुकी हैं और काउंसलर भी हैं, दूसरी जो हैं काउंसलर भी हैं और MEP के लिए भी है ना उम्मीदवार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो MEP के लिए मुंतखब हो जाएं। तो मेरा पहला जो सवाल है वो मोहतरमा नसीम अयूब साहिबा से है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमने आपको इन्वाइट किया है एज ए कश्मीरी लेडीज़, आप हमारी बहनें हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आप क्या अपने आप को कश्मीरी समझती हैं या पाकिस्तानी समझती हैं? Ji, thank you. First of all, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Dr. Shabir Saab and Shapal Saab for inviting us here, and thank you for Venus TV for bring this to the public today. हाँ, मैं अपने आप को बिल्कुल कश्मीरी समझती हूँ, even though मैं इधर born and bred हुई हूँ। मेरे पेरेंट्स जो हैं एक ब्यूटीफुल प्लेस कॉल्ड कोटली आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, और मैं उनकी बेटी हूँ, और हम सब बहन भाई इधर पैदा हुए हैं, बट इट डजंट मैटर, हमारे ब्लड में जो है ना कश्मीर का खून है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं ये सवाल आपसे करना चाहूँगा, भाई आप जो हैं अपने आप को कश्मीरी समझती हैं या पाकिस्तानी समझती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं विनस TV और आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया और हमारे ख़यालात का इज़हार करने का मौका दिया। तो मैं अपने आप को कश्मीरी समझती हूँ। मैं भी कोटली आज़ाद कश्मीर से तल्लुक़ रखती हूँ और मेरे पेरेंट्स भी कोटली आज़ाद कश्मीर से हैं। अच्छा, माशाल्लाह, दोनों कोटली से हैं और दोनों का तल्लुक़ कश्मीरी हैं, बड़ी अच्छी बात है। मुझे बताएं कि एज काउंसलर आपने कश्मीर के लिए क्या खिदमत अंजाम दी हैं, क्या कुछ किया कश्मीर को उजागर करने के लिए, मसला कश्मीर को आपने क्या रोल अदा किया? मैं आपसे पूछना चाहूँगा नसरीन साहब। जी शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इधर रहकर अपने वैल्यूज़ को, अपना पाकिस्तान, अपने कश्मीर को भूलना नहीं चाहिए हमें। और अल्हम्दुलिल्लाह इन 2011 व्हेन आई वाज इलेक्टेड, जब मैं इलेक्टेड हुई एज अ काउंसलर रिप्रेजेंट करने के लिए बिस्कुट वार्ड को, तो मई जून में हम इलेक्टेड हुए, और मेरी फर्स्ट स्पीच जो थी मैंने मोशन पेश किया था ऑन द 13th of October एट लूटन बरो काउंसिल, तो वो यूनानिमसली पास हो गया था। Good. What was the motion on? Was it in particular on Kashmir issues? The motion was on the right to self-determination of the Kashmiri people. Oh, wonderful. And Asma Sahaba, would you like to continue and tell us a little bit more about yourself and your role as a counsellor? जी हाँ, मैं 2 साल पहले एज अ काउंसलर सेलेक्ट हुई थी और सेकंड ईयर में मैं एज अ डिप्टी मेयर भी सेलेक्ट हुई हूँ।
और डिप्टी मेयर की काफ़ी सारी ड्यूटीज़ होती हैं जो मैंने काफ़ी इंजॉय किए हैं और काफ़ी कुछ लर्न भी किया है। और हमारे लुटन बरो काउंसिल में जो 14 कश्मीरी काउंसलर्स हैं जो कोटली के हैं, हम सब की मुश्तरका फ़ैसले से हमने ये करारदाद पेश की थी लुटन बरो काउंसिल में, और आइंदा भी कुछ करेंगे इंशाल्लाह। Inshallah, yes. As being from Courtly, it is very, very well representative of Luton Borough Council. Do you find it's easier as a lady councillor to put motions forward and have people sort of listen to you more, or do you find that as being a bit of an obstacle? Because generally speaking, it's a male-dominated society for politicians, certainly from our backgrounds. Do you feel that ever enters you? Yeah, you're absolutely right actually. When I presented the motion on Kashmir, I was not the only one who did it. It was the Kashmiri people were behind this. The main Pakistani Kashmiri councillors from Luton Borough Council, Councillor Riaz Bhatt Sahib, the other councillors, they were all involved in this. So, and I represented it on behalf of all the councillors. So the credit should go to everybody. Okay. Because what I was trying to get at was we have a popular sort of a cultural belief that, as Dr. Saab has already mentioned, that a woman's place in the kitchen, but you definitely haven't found that at all, and therefore you are in a way pioneers, both you ladies, certainly in Luton Borough Council, and I'm sure you can encourage more and more women to participate in this. And of course, with the Kashmir struggle, for example, it's not a struggle just for the males. Certainly the females come highly into it, and therefore it's even more of a pleasure to have you on tonight. Asma Sahaba, do you find that perhaps the other ladies in the Kashmiri community around Luton, for example, are they proud to have you there? Are they showing interest in perhaps joining the ranks as well? जी हाँ, अगर टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए तो आई थिंक ऑल द लेडीज़ शुड कम अहेड एंड पार्टिसिपेट करें Yeah. लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी बात ये ऐड करना चाहूँगा। मसलन अभी शफार साहब ने कहा कि यानी इम्प्रेशन ये निकला कि जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि वीमेन रोड वेयर किचन टाइप, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें बात यह है कि आम पुतों का परसेप्शन है, ये मेरा व्यू नहीं है। No, that's what I said, Dr. Sab. I said the cultural perception is what I said, as you alluded to. Yes, of course. मैं तो ये नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूँ कि लेडीज़ का बड़ा अहम रोल है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़ाहिर है कि आपको अपना रोल अदा करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी भी आई होगी, बिकॉज यू आर मैनेजिंग मैनी थिंग्स। और आप इस बारे में बता सकते हैं कि घर वालों ने आपको कैसे सपोर्ट किया इसमें, या किया भी है या नहीं किया? जी, इसमें हमारे जो मेरे हस्बैंड हैं ना, वो भी काउंसलर हैं, काउंसलर मोहम्मद अयूब साहब, और पहले वो काउंसलर थे, उन्होंने मुझे ड्रैग किया है पॉलिटिक्स में। पहले तो मैं टीचर थी, तो टीचर से वो ट्रांजिशन जो पॉलिटिक्स में हुआ ना, वो मेरे हस्बैंड की तरफ से हुआ, उनकी सपोर्ट मेन थी मेरे लिए। एंड आई थिंक अगर आपके घर में सपोर्ट हो ना, आपका शोहर अगर सपोर्ट करे ना, तो काफ़ी अच्छा होता है, इजी हो जाता है। बिकॉज़ ये क्या होता है, फिर हम शेयर करते हैं। जैसे आसमा ने कहा ना कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ टीचर वैसे भी टाइम मैनेजमेंट का लाइक लेसन्स, बच्चे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पहले छोटे थे बच्चे, उस वक्त मेरे हस्बैंड फुल टाइम काम करते थे, बिज़नेस अपना चलाते थे। उन्होंने मुझे टाइम दिया ज़्यादा अपने आप को एजुकेट करने का, फॉर्मल एजुकेशन हासिल की, ग्रेजुएशन हासिल की, फिर उसके बाद जब मैं टीचर बनी तो फिर मैंने काम शुरू किया। सो आई थिंक वो जो पीरियड था गिव एंड टेक का जो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और अपने हस्बैंड का साथ, आपके हस्बैंड ने तो अगेन अच्छी बात है कि उन्होंने आपको सपोर्ट किया। जो हमारे होता है ना एक्सटेंडेड फैमिली होती है, क्या उनकी तरफ से भी सपोर्ट आई या फिर? हाँ, बिल्कुल आई है। मेरे पेरेंट्स जो हैं हमेशा नंबर 1 सपोर्टर्स, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरे भाई बहनें। वो मेरे जब बच्चे छोटे थे ना, तो मुझे तो पता नहीं था कि उनकी नैपी किसी ने चेंज किया है, उनको खाना किसी ने खिलाया, मुझे परवाह नहीं थी, बिकॉज इसलिए कि फैमिली की सपोर्ट काफ़ी थी। एंड आई एम श्योर आसमा भी बता सकती है कि फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको भी सपोर्ट हासिल रही है, आपने खामद की और फैमिली सबकी? जी हाँ, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट फुली सपोर्ट है। अगर उनकी सपोर्ट ना होती शायद मैं आज इस मकाम पे ना होती। तो मेरी फैमिली की भी सपोर्ट है इसमें, और हमारा तल्लुक़ भी सियासी ख़ानदान से है, तो इससे भी थोड़ा सा मुझे शौक़ पैदा हुआ है।
So you're telling us that you come from a background of politicians, so you've always been brought up. So in a way you've taken over a family trait to carry on. Mashallah, that's very encouraging news to hear both from of you. Asma Sahiba, your role as a deputy mayor that you've already said. One of the roles I understand the deputy mayors have their own personal charities and stuff like that as well. Was any of your roles ever heading out towards both Pakistan administered Kashmir or perhaps Indian occupied Kashmir as well? Did you ever do anything of the sort for that cause? फिरोज़ हकीम फ़िरोज़ कादरी फाउंडेशन थी, उसको मैंने डोनेट किया था. जी हाँ. Yeah, and that's a charity that operates in Kashmir. Overseas. So that's another line that you've shown your solidarity with the Kashmiri people and carried on from there. Now, do you feel that as your role as councillors, you can highlight the Kashmiri struggle and the demands of the Kashmiri people to higher levels of government? Because obviously you with one of the major parties of political Britain, so do you find it's easier for yourselves to go to others in your party at senior levels and discuss these issues? Do you ever get a chance to do that? I think we try our best. The thing is that since becoming a councillor, I think I've got more and more involved with the Kashmir issue. I think there's more awareness due to my husband being from Kashmir. He's highlighted, this is what's happening in Kashmir. Otherwise, I think it's the lack of knowledge that we have in this country. When you're born and brought up in this country, you don't have that influence that people up from Kashmir, what they have to face on a daily basis, or what they're going through, or the experiences that they've had. We've not been through those experiences. Do you find that's because lack of information coming perhaps from your parents or the general community, and that's why you're not aware of I'll say roots? Because you've already told us that you're both from Kashmir as well. Although you're born here, within your blood, you believe that you are from Kashmir. Absolutely. Who do you blame for not giving the information to the youngsters? Is it the parents as such, or just general communities? I think it's a bit of both, actually. From myself, when I first went to Pakistan, I think it was really important that parents here, especially if they have children here, if they've got no connections left to Pakistan, Kashmir, then there's not that link there. There's no connection there. And I was quite fortunate. My parents took us to Kashmir, and when we got there, we got to see what's going on, what the struggle is. Whereas if you look on the contrary, people that are born and brought up here and they've got no connections to Kashmir, they're not aware of the problem or the issue. And if you ask any next person, even whether they're Kashmiri or Pakistani, they're going to say, oh, what is the Kashmir issue? Actually tell us, we don't know. मैडम आसमा राठौर, आप मुझे बताएं कि आपके हिसाब से मसला कश्मीर है क्या और इसका हल क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मसला कश्मीर यही है कि जो अनलॉफुल किलिंग्स हो रही हैं कश्मीर में, वो नहीं होनी चाहिए, उसको स्टॉप करना चाहिए. भाई कश्मीर को आप क्या समझती हैं कि कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहिए, पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए, या आज़ाद और खुद मुख्तार रहना चाहिए? क्योंकि तीन ऑप्शन आमतौर पर डिस्कस होते हैं. खुद मुख्तार होना चाहिए. जी हाँ. अच्छा, आप इस बारे में क्या कहेंगी? आई थिंक बात यह है कि पहले तो हम जो जितनी पार्टीज़ हैं ना, सब के एजेंडे पे तो है कश्मीर, लेकिन ये है कि एट द एंड ऑफ द डे सब चाहते हैं, एक ही बात चाहते हैं कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मिले कश्मीर को. जब वो मिल जाएगा, जब हासिल वो कर लेंगे ना, उसके बाद उनको डिसाइड करना चाहिए. आप ये कहती हैं पे राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी कि अनफेटर्ड राइट, क्योंकि अब कन्फ्यूजन ये आ गई है कि कहते हैं कि कश्मीरियों को इस वक्त जो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के मुताबिक सिर्फ दो ऑप्शंस हैं. राइट कहते हैं कि राइट टू एक्सीड विद इंडिया, राइट टू एक्सीड विद पाकिस्तान. तो टू मी एंड टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी दैट इज़ नॉट राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, बिकॉज दैट इज़ राइट ऑफ एक्सेशन. जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है उसमें तो फ्री चॉइस होती है. तो आप क्या समझते हैं कि जो अनफेटर्ड राइट होना चाहिए, कि राइट टू इंडिपेंडेंस भी होना चाहिए उसमें?
हाँ, राइट ऑफ इंडिपेंडेंस होना चाहिए, होना फिर चाहिए। उसके बाद रेफरेंडम या इस जो भी तरह लोग की जो फैसला करें, जी जो भी लोग फैसला करें, राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन मस्ट इंक्लूड राइट टू इंडिपेंडेंस, जी। और जो भी लोग फैसला करें वो सब कबूल कर लें। बिल्कुल बात यह है कि पहले तो ये जैसे मैंने पहले कहा कि आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको करने के लिए देखो 64 ईयर्स ऑलरेडी हो गए हैं और अभी तक वी नॉट इवन फ्रॉम हियर टू देयर। तो मामला ये है कि पहले for example Pakistan and India, if they sit down, if there's dialogue, and definitely the Kashmiri इसकी people बात है कि need they to- always sit down। No. क्वेश्चन ये है कि विनी आप इत्तेफाक करेंगे मेरे साथ, आई होप कि इंडिया पाकिस्तान तो बैठते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम टू डिस्कस अदर इश्यूज एज वेल एज कश्मीर। वी पीपल ऑफ द जम्मू कश्मीर हु आर द मेन पार्टी, वी आर नॉट अलाउड टू सिट विद देम टू नेगोशिएट द फ्यूचर और इवन डिस्कस इट। So what do you say? Should India and Pakistan only discuss, or should we be? आप क्या कहेंगे आसमा राठौर साहब, अभी क्या कश्मीरियों को भी साथ बिठाना चाहिए या नहीं बिठाना बिल्कुल चाहिए? सही, बिठाना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए, जो वो चाहते हैं वही होना चाहिए। होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो आप क्या इसके बारे में कहेंगे भी, क्या वी शुड हैव अ राइट टू, ये जो प्रोसेस है, डायलॉग का प्रोसेस है, वी शुड बी पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस और नॉट? We should definitely be part of that process. Unless we're not, if we're not a part of that process, I don't think that process Then can go. question arises, It who should be representing Kashmiris? There is a Azad Kashmir government, and there is on the other side Jammu Kashmir government है, कुछ कश्मीरी diaspora भी है, then who should represent? Who? Azad Kashmir should represent it, I think. Azad Kashmir जो Yeah. government है, they should represent the entire state of Jammu Kashmir? Yes, I think Pakistan and Azad Kashmir together. But that wouldn't. I have to disagree with yourselves there. I think there's slight confusion here because if Pakistan is saying that they want Kashmir as part of Pakistan, and India are saying they want Kashmir as part of India, so therefore the Pakistani government would never ever go and say, well, we will give the Kashmiris the freedom Azad to have the referendum or plebiscite. So I think what we're trying to get at is who would be an appropriate leader in your opinions to represent the actual Kashmiri people themselves, regardless, because it should be tri-party talks, not bilaterals, but trilateral talks, and there should be a Kashmiri representative sitting there as Absolutely, well. there should be, yeah. So do you have any ideas, perhaps, who that person could be? Well, you just mentioned the trilateral parties. Obviously, tri means obviously three of them need Yes. to be involved, and until the three are not involved, then we can't move forward. Right. Okay. Asma, do you agree with that Yes, I agree. as well? So you both say that it should be a trilateral. Yeah. Okay. We have a caller online. We'll see who we have. Assalamu alaikum. Good evening to you. वालेकुम सलाम जी, सदीक फ्रॉम ग्लासगो सर। Ji, welcome, Sadiq Sahab. जी, मेरी दोनों बहनों से अर्ज़ ये है कि कौम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं वो कश्मीरियों को हक़ खुद इरादी के ज़रिए either they can affiliate with Pakistan or either they can affiliate with India. No, the United Nations that you're mentioning, the resolution actually states that there should be a plebiscite held where the people of Kashmir decide. So it's not a matter of whether you accede to Pakistan or India. But I shall put your point towards ladies. I think that's what we were discussing as well. The gentleman from Glasgow is saying that the United Nations resolution perhaps say that Kashmiri should either accede to Pakistan or India. Are you aware of any such resolution? To my knowledge, I don't think that is the case. I think occupied Kashmir will be given a plebiscite which was promised many years ago, which still has not been implemented, and they had the right to plebiscite, but till yet, nothing's been done about it. Again, I want to bring you into the discussion as well. ये बताएं कि मसलन अब ये कह रही थी नसरीन साहिबा कह रही थी कि आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उसको ये हक़ होना चाहिए कि वो सारी रियासत जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करे। जब आप सारी रियासत कहते हैं तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान भी आता है, जम्मू भी आता है, लद्दाख भी आता है और वादी कश्मीर भी आती है, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। ये तकरीबन 4000 के लगभग 4000 स्क्वायर माइल है, तो छोटा सा एरिया है। तो ये आपके हिसाब से ये ठीक होगा कि ये छोटा सा एरिया है जो कि एक लिहाज से पाकिस्तान की इन्वर्टेड कोमा कॉलोनी बना हुआ है, ये सारी रियासत जो है ना, ये 84,000 या 85,000 स्क्वायर माइल है, उसकी नुमाइंदगी करें। आप अभी क्या कहेंगे इस बारे में? ये जो इलाका आज़ाद कश्मीर का है, क्योंकि यहाँ पर
वादी कश्मीर से कोई आदमी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, जम्मू से कोई नुमाइंदगी नहीं होगी, लद्दाख से कोई नुमाइंदगी नहीं होगी, गिलगित बल्तिस्तान से कोई नुमाइंदगी नहीं होगी, तो ये फिर उन सब के लिए कैसे बात कर सकेंगे? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता। नहीं नहीं बिल्कुल। तो कोई ना कोई और चीज़ होनी चाहिए भी। देखिए गिलगित बल्तिस्तान की यहाँ पर कोई नुमाइंदगी नहीं है। फिर यह कि आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं या लीडरशिप हैं, वहाँ कोई किसी ये हिंदू को, किसी सिख को, कोई बुद्धिस्ट को, कश्मीरी पंडित को ये नुमाइंदगी उन्हीं का है इनके। Then how do we justify that the Azad Kashmir government should be representing the entire state of Jammu and Kashmir? देखो, आई थिंक इट्स मोर रीजनेबल कि आज़ाद कश्मीर उनके साथ मिलकर सबको रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि इट मीन्स मोर टू देम देन इट डज टू एनीबॉडी एनी अदर कंट्री. So इसलिए I think they should all be engaged and involved in this process. So in other words, आप ये कह रही हैं कि पहले कश्मीरियों के दरमियान आपस में डायलॉग होना चाहिए among the Kashmiris, Yeah. people from Gilgit Baltistan, Azad Kashmir, Jammu, Ladakh and the valley. Absolutely. They should sit down and discuss, and then वो आपस में फैसला करके decide कर सकते हैं कि who is the best person to represent. Yes, absolutely. We Wonderful, got a thank caller. you. We have another caller online. Ji Naveed Saab, Assalamu alaikum and good evening to you. अस्सलामुअलैकुम। मैं दरअसल आपसे ये अर्ज करना चाहूँगा कि जो आप डिस्कशन इस वक्त कर रहे हैं कश्मीर के सिलसिले में, जी। मसलन आपने कहा है कि ये क्वेश्चन जो है कश्मीर का ये राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का है, और पाकिस्तान और इंडिया को ये यूनाइटेड नेशन में जो इन्होंने करारदादें पास करवाई हैं, उन करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को सिर्फ हक इलाहा के पाकिस्तान या इलाहा के इंडिया के साथ दिया जाता है। मेरी अर्ज ये है कि 1947 में जो करारदादें पास हुई थी, उनमें ओरिजिनली ऑप्शन नंबर 1 जो हमारे कश्मीरियों के लिए ऑप्शन नंबर 1 है, वो है खुद मुख्तारी का सवाल, और वो पाकिस्तान ने 1950s में खारिज करवा दिया उस करारदाद को। लिहाजा इस वक्त जो कश्मीर पे करारदादें हैं वो कश्मीर के खिलाफ है, कश्मीर की खुद मुख्तारी के खिलाफ है, कश्मीर की सेल्फ डिटर्मिनेशन के खिलाफ है। नतीजतन हमें कश्मीरियों को उन करारदादों के मुताबिक मसले का हल नहीं चाहिए। हमारा मसला ये है, thank you very much. I understand what you're trying to say. Thank you very much, Naveed Saab, for your call. जी, नवीद साहब यही बता रहे थे कि पाकिस्तान और India, they've gone back to the United Nations and tried to forget the original resolutions that were passed in 1947 to try and exclude the Kashmiri community from participating in any negotiations, and therefore they're only leaving them the option of acceding. Therefore, obviously, the Kashmiri community would never agree with that. And of course, you can never ever have anybody just being ignored completely. If it's your house, you will fight for that house. Yeah. And I suppose that is what the Kashmiri community would want to do in any negotiations. Feel free, if you're a bit more comfortable in English, feel free to give us your views in English if that's what you want to do. बस कश्मीर कश्मीरियों का है और उनको मिलना चाहिए। अच्छी बात। इसमें देखें, ये जो अभी भाई साहब ने फ़ोन किया, नवीद साहब ने, उसमें पहली बात तो यह है कि मैं करेक्शन थोड़ी करना चाहता हूँ कि 1947 में तो कोई करारदाद पास ही नहीं हुई थी, ठीक है। करारदाद जिसका वो जिक्र कर रहे हैं वो अगस्त 1948 में पास होती है, और जो सेकंड करारदाद जिसका वो जिक्र कर रहे हैं वो 1950 में नहीं होती, वो 5 जनवरी 1949 को होती है। इन एनी केस वो ये कहना ये चाहते थे कि कश्मीरियों के हक़ के खुद अरादियत, यानी हक़ के खुद अख्तियारी या खुद मुख्तारी को पाकिस्तान ने महदूद कर दिया था, और महदूद कर दिया था। और उस लिहाज से आया वो जो करारदादें हैं जो 48 या 49 में पास हुई या 50 में पास हुई हैं, क्या उन्हीं के मुताबिक अमल होना चाहिए या वी शुड अंडर द न्यू सिचुएशन कोई नई चीज़ आनी चाहिए? I think it's back to the same question again, isn't it? बात यह है कि if you look around the world, जहाँ human rights के violations होते हैं, जहाँ लोग freedom मांगते हैं, उनको मिल जाती है, लेकिन पाकिस्तान वो कश्मीर का इशू क्यों अभी तो क्यों नहीं मिल रहा? क्यों नहीं मिल रहा? What is the root cause? For example, I mean, I'll give you just an example. East Timor of Indonesia, वो हमारे बाद, sorry, can I speak in English? After us, they gained independence, and the same thing is with I can't remember the other country, and Sudan. Sudan is East Timor you were referring to. Yeah, I was referring to that, and then Kashmir is part of South Asia, and Kashmir is. We'll take a very short break, and we'll continue the conversation when we come back. Ladies and gentlemen, keep watching. We'll take a very short break, and we'll be right back with you. Keep watching Venus TV.